गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन। एसएससी एग्जाम हो, यूपी बोर्ड हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, प्रेपोजिशन के बिना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता है। तो चलिए एक एक रूल समझते हैं इजी एग्जाम्पल्स के साथ। पजल 1, व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? डेफिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताता है, यानी कि सेंटेंस में किसी चीज का कनेक्शन टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, पोजीशन बताता है। डेफिनेशन: अ preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and the other words in a sentence. Examples: The book is on the table. She came from Delhi. He is in the room. Trick to remember: preposition equals to position before noun or pronoun. Time 1, prepositions of time, यानी कि समय बताने वाले prepositions. टाइम बताने के लिए हम मोस्टली 3 prepositions यूज करते हैं, at, on और in. चलिए समझते हैं कब कौन सा यूज होता है। नीचे यूज preposition example: छोटी या एग्जैक्ट टाइम at 5 o'clock, at noon, at night. Days or dates: on Monday, on 15th August. Months, years, seasons, period: in January, in 2025, in winter, in the evening. Trick: at मतलब छोटी टाइम, on मतलब डे या डेट, in मतलब लंबा समय. Examples for practice: The train arrives at 7 p.m. We will meet on Sunday. He was born in 2005. लोकेशन यानी कि प्लेस, prepositions of place यानी कि स्थान बताने वाले prepositions. प्लेस बताने के लिए भी इन्हीं 3 का यूज होता है, in, on और at, बट थोड़ा मीनिंग अलग होता है. यूज preposition example: closed area: in the room, in the box, in the city. Surface ऊपर चिपका: on the wall, on the table, on the roof. Exact point यानी कि स्पेसिफिक जगह, at the station, at the door, at the bus stop. in का मतलब अंदर, on का मतलब ऊपर, at का मतलब exact point. Examples: She lives in Delhi. The picture is on the wall. I am at the gate. Movement: prepositions of direction और movement यानी कि दिशा या गति बताने वाले prepositions. जब मूवमेंट होता है, किसी जगह से किसी जगह जा रहे हो, तब कुछ अलग prepositions लगते हैं. यूज preposition example: destination: to go to school, go to market. Towards walk towards the station. अंदर जाना: into jump into the pool. सरफेस पर मूव करना: onto climb onto the roof. Source: from come from Lucknow. To यानी कि destination, from मतलब starting point, into मतलब अंदर movement. Examples: The boy ran into the class. He came from Mumbai. The cat jumped onto the chair. Verb के साथ fixed prepositions मतलब phrasal verbs. इंग्लिश में कुछ वर्ब्स के साथ preposition फिक्स होती है, बदल नहीं सकती. इन्हें phrasal verbs कहते हैं. Verb preposition example: depend on, he depends on his parents. Listen to, listen to me carefully. Believe in, believe in God. Laugh at, don't laugh at others. Look at, look for, look after. Look at the board, look for your pen, look after your brother. Agree with, to, I agree with you, he agreed to the plan. Wait for, wait for me. Talk to, about, talk to him about studies. Examples के लिए SSC trick: He is good dash English. आंसर है at. Error rules मतलब preposition error rules. ये वो prepositions हैं जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं और SSC में कंफ्यूज करते हैं. Discuss about the topic नहीं होगा discuss the topic.
Describe about your school नहीं होगा describe your school. Enter into the room नहीं होगा enter the room. Order for tea नहीं होगा order tea. Request for help नहीं होगा request help. रूल है डिस्कस, डिस्क्राइब, एंटर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं. प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम ड्यूरेशन यानी कि सिंस, फॉर और फ्रॉम. प्रेपोजिशन यूज एग्जाम्पल. सिंस फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट टाइम स्टार्ट कब से सिंस मॉर्निंग सिंस 2010. फॉर ड्यूरेशन यानी कि कितने समय तक फॉर 2 hours फॉर 5 days. फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट विथ टू और टिल from Monday to Friday. Trick present perfect में since for, simple में from to. Between versus among, use preposition example. 2 persons or objects between Ram and Sham, 3 or more among the students. In versus into, preposition meaning example. In position inside, the boy is in the room. Into movement inside, the boy jumped into the pool. On versus upon, preposition meaning example. On surface, the book is on the table. Upon action formal, once upon a time there was a king. Across versus through, preposition meaning example. Across one side to another open area, he swam across the river. Through अंदर से closed area, the train passed through the tunnel. By versus with, preposition use example. By agent या person, the song was sung by Arijit Singh. With tool या instrument, he cut the apple with a knife. Rule है by is person, with is thing. सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस लगता है preposition के बाद. He gave it to I नहीं होगा he gave it to me. Between you and I नहीं होगा between you and me. Important preposition phrases. Word, correct preposition, example. Afraid of, I am afraid of snakes. Angry with person, at thing, she is angry with her friend. Consist of, the class consists of 30 students. Good at, he is good at maths. Proud of, I am proud of my country. Interested in, she is interested in music. Fond of, he is fond of sweets. Depend on, they depend on their parents. Prepositions with passive voice. Passive voice में काम करने वाले के पहले by लगता है. The song was sung by Lata Mangeshkar. The book was written by Shakespeare. Prepositions with adjectives. Adjective preposition example. Afraid of, she is afraid of the dark. Aware of, I am aware of the truth. Capable of, he is capable of doing this work. Different from, this book is different from that one. Responsible for, you are responsible for this mistake.